तो आम आज कंप्यूटर साइंस रो स्पेसिफिकाली गोटे गोटे सब्जेक्ट आज आम क्लास स्टार्ट करवा। तो आज आम ऑपरेटिंग सिस्टम रू स्टार्ट करूँ। पाखापाखि 50टा MCQ आज डिस्कसन करवा आज क्लास रे। एमती नेक्स्ट पुणी आउ गोटे विषय आउ गोटे चैप्टर एमती चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सारा सबू जो जो वीडियो डिस्कसन कर पुणी अनदर वीडियो किसी आणबू। तो ये सब प्रिपेरेसन करी पुणी आम वीडियो द्वारा आसो है डेली गोटे दुईटा वीडियो क्लासेस आम अपलोड करूँ कहीं है तो आशा करुँच वीडियो भल लगुव। तो जो मानू भल लगुच दयाक वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित अन्य सहित शेयर करेंगे। आउ जो मैंने नुआ अच्छा सियोर एम तो सियोर एतिकी करेंगे है। तो आम बर्तमान समय नष्ट करी नक क्वेश्चन आंसर करने को चेष्टा करवा। तो जदि किसी साउंड प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम हो से आम कौन करना से आम आंसर रो भी हैंड रिटर्न कर देचु मैंने टाइपिंग करी आंसर भी आम तार तले एक्सप्लेनेशन सह मेंशन कर दे जहाँद्वारा कौन कौन जदि भी वॉइस किसी प्रॉब्लम हो शुणवे तो आपने पढ़ी जानीपर है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑप्शन गुड़िया कौन अच्छी? ऑप्शन नंबर ए interface between the hardware and application program, collection of programs that managed hardware resources, system service provider to the application program, all the mentioned. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन? एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लिकेशन प्रोग्राम ठीक उत्तर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेस एटा भी ठीक उत्तर। कलेक्शन प्रोग्राम जो गोटे एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर से कौन गोटे दस डिवाइस ड्राइवर आम डाउनलोड कर द्वारा कौन हो प्रिंटर स्कैनर यूज कर पार्छु। आउ गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नथिले हम डिवाइस ड्राइवर यूज कर पारथांते ना से हार्डवेयर डिवाइस को यूज कर पारथांते किसी कर पारना थांते ताना ऑपरेटिंग सिस्टम मैंडेटरी रहिला। नेक्स्ट ऑप्शन कौन अच्छी? सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू एन एप्लिकेशन प्रोग्राम एटा भी ठीक उत्तर। ताले सठिक उत्तर कोउटा ना ऑप्शन नंबर डी कौन ऑल ऑफ द मेंशन्ड उपरोक्त समस्त कौन ऑपरेटिंग सिस्टम रो एक डेफिनेशन तार एक्सप्लेनेशन तले राइट डाउन कर देछि जदि चाहिए वीडियो को पॉज करी सेटा को पढ़ी पारिबे। तो पीडीएफ मध्य आम ग्रुप रो शेयर कर देबु जो मन को पीडीएफ दरकार लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन दरकार सब किसी पीडीएफ दरकार ग्रुप दयाकर टेलीग्राम ग्रुप चैनल रे हमर जॉइन कर जांतु। आउ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलंतु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रिटर? इंटरप्रिटर कमांड रो मेन फंक्शन टा कौन? ऑप्शन 1 टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लिकेशन प्रोग्राम, टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफिक कमांड, नॉन ऑफ द मेंशन्ड। ताले ऑप्शन कौन? ऑप्शन सी टा उत्तर सठिक उत्तर टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। एटार काम कहार कमाटा? कमांड इंटरप्रिटर काम। तार एक्सप्लेनेशन मध्य तले लिखीचु चाहिए आप पढ़ी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? तले तले जति रहिला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कोटा? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो ठीक, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ठीक, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट एटा भी ठीक। ताले कोटा सठिक उत्तर ना कोटा सठिक उत्तर? ऑल ऑफ द मेंशन सब गुड़ी तार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मध्य तले अच्छी वीडियो को पॉज कर देखिपारे। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होगा? टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द डेस।
तो इंटरफेसटा प्रोवाइड किए करे सिस्टम कॉल्स है तो लाइब्रेरी नुहे असेंबली इंस्ट्रक्शन नुहे एपीआई नुहे कौन सिस्टम कॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया टू एक्सेस सर्विसेज ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एन इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल्स generally these are function written in C and C++. Open, close, read, write are some of the most prominently used system calls. Next question देखिए कौन CPU scheduling is the basic of DES. CPU scheduling टा basic of कौन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ना CPU scheduling. Next question देखिए which one of the following is not true. तो निम्नलिखित भितर कोटा सठिक नुह भूल kernel remains in the memory during the entire computer session. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. Next question. Kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Kernel is the program that constitute the central core of the operating system. Option कोटा ठीक है उत्तर ऑप्शन नंबर बी because kernel is the first program that is loaded in memory when operating system is loaded as well as it remains in memory till operating system is running. अच्छा kernel is the core part of the OS which is responsible for meaning resources allowing multiple processes to use the resources and provide सर्विस टू वेरियस प्रोसेस है एमती जो लेंदी अच्छी एक्सप्लेनेशन गुड़ा तो मुझे आम अधिक डिस्कसन कर समय नष्ट करवानी से आपजे निजे पढ़ी पारे पॉज कर वीडियो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पढ़ी पारे ग्रुप लिंक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप रे. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. कौ एररटा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क पावर फेल्योर ऑल ऑफ द मेंशन्ड. कौन एरर ऑल ऑफ द मेंशन तुम पानी जदि किसी प्रॉब्लम नथिबो ताले किसी असुविधा नहीं जे कनेक्शन ऑफ फेल्योर इन द नेटवर्क तो ठीक सत कि मिछ तुम जानिथिबो पावर फेल्योर सत तुम जानथिबो पखाड़ खाइबो वन ऑफ द मेंशन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ठीक कौट केटा ऑल ऑफ द एबव माने सब गुड़ा तार सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी. सठिक उत्तर कौटा आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन इंटरप्ट वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन if a process fails most operating system writes the error information to a कौन log file. जदि गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हुए ताले कौट रही log file. which one of the following is not a real time operating system. कौटा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे आरटी लिनक्स पाम ऑपरेटिंग सिस्टम QNX VxWorks. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कौन पाम OS. एक्सप्लेनेशन लिखाई कौन पाई VxWorks QNX and RT Linux are real time operating system. Palm OS is a mobile operating system. Palm OS is developed by personal digital assistants. तापरे what does the OS X has कौन हाइब्रिड कर्नेल कौन हाइब्रिड कर्नेल कौन the combination of two different kernel. OS X is developed by Apple and originally it is known as Mac OS X. Next question. In operating system, each process has its own dash on files, pending alarms, signals and signal handlers, address space and global variables. All of the mentioned. ऑप्शन नंबर डी सठिक उत्तर
ऑल ऑफ द मेंशन कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम रे सब जिनस थाए ए बी सी ऑप्शन सब जिनस अवेलेबल थाए नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot assigned to a process is completed the process switches from the current state to ready state ठीक ना भूल current state to ready state को जंप करे केतेबेले when the time slot assigned to a process is completed नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक्सप्लेनेशन आपण माने पॉज करी वीडियो देखि परिबे कार्ड कास्टिंग टर्मिनेशन refers to the termination of the child process if the parent process terminates dash normally or abnormally जदि normally कि abnormally parent process टा terminate करे कास्ट कार्डिंग टर्मिनेशन सीटा कौन कहते कास्ट कार्डिंग टर्मिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द को स्टेट रेडी स्टेट है आर पीडीएफ गुड़ा आम ग्रुप रे शेयर कर देबो बहुत जल्दी वीडियो सरिले ट्रांजिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज ए कोड दैट comes and goes as needed है नेक्स्ट क्वेश्चन the portion of the process scheduler in an operating system that dispatches process is concerned with assigned ready process to CPU the portion of the process scheduler in an operating system that dispatches process in concerned with assigned ready process to CPU next question the FCFS algorithm first come first serve algorithm is particularly troublesome for dash multi programming system रे एटा ट्रबल करे कौन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक टा केते बेले चेक करबा आवश्यक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम रे कौन every time a resource request is made at fixed time interval जदि एक फिक्स टाइम इंटरवल ला जते बेले गोटे रिसोर्स को रिक्वेस्ट करा जाए सेते बेले कोन डेडलॉक को चेक करबा आवश्यक a deadlock avoidance algorithm dynamically examines the dash to ensure that a circular wait condition can never exist ऑप्शन नंबर डी उत्तर सिस्टम सठिक उत्तर रिसोर्स एलोकेशन स्टेट कौन ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू एंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी नेवर एग्जिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्वैपिंग डैश बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन ओनली टू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स ठीक उत्तर कोटा मस्ट नेभर तापर कौन स्वैपिंग मस्ट नेभर बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेन मेमोरी अकोमोडेट डैश कौन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू नुहे यूजर प्रोसेस नुहे कौन उत्तर ऑपरेटिंग सिस्टम next question the operating system is responsible for dash the operating system is responsible for bed block recovery booting from disk initialization option d उत्तर सठिक आंसर तुम्हें तीनटा सारा कारक responsible for operating system पे next question the operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process because every address generated by the CPU is being checked against the location and time registers next question देखिबा ताले उत्तर कोटा ऑप्शन नंबर ए next question using transist code the size of the operating system during program execution using transist code the size of the operating system during program execution changes है ट्रांजिस्ट कोड चेंज हुए the operating system maintains a dash table that keeps track
of how many frames have been allocated, how many are there and how many are available. କ'ଣ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି ତାର frame. An operating system maintains a frame that keep track of how many frames have been allocated. Next question. To obtain better memory utilization, dynamic loading is used. With dynamic loading, a routine is not loaded until it is called. For implementing dynamic loading, dash. Option number C goes उत्तर कौन. User programs can implement dynamic loading without any special support from hardware or operating system. Question कौन था. To obtain that memory utilization, dynamic loading is used. With dynamic loading, a routine is not loaded until it is called. For implementing dynamic loading, a special support. Option C कौन. User program can implement dynamic loading without any special support from hardware or operating system. Next question. The dash parents अनुसार होला कौन. The device driver parents device access interface to the input output subsystem much as calls provides a standard interface between the application and the operating system. कौन ए भितर कोटा नुहे. The process the present a uniform device access interface to the input output system which as much as system call provides a standard interface between the application and operating system. Next question. The real-time operating system processes scheduling can be done only once. All purposes have the same opportunity. Kernel is not required. A task must be served by the question. In real-time operating system, process scheduling can be done by once. तो सठिक उत्तर कोटा डी. The task must be serviced by the deadline period. बेसी वीडियो आमर 30-50टा पाख वीडियो कले टी वीडियो लेंथी हो से जल्दी जल्दी क्विकली सारचु है. वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए. वीडियो को लाइक करिए. साथ शेयर करिए. ओके. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डेस जिटर देन ए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन नंबर सी हो ठीक अनुसार. द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज लेस जिटर देन ए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सर कौन सी एक्सप्लेनेशन कौन. जिटर इज अनडिजायर्ड deviation from the to periodicity. Next question. For real time operating system, interrupt latency should be minimal. ला कौन minimal हो सठी उत्तर. Next question. Which one of the following is the a real time operating system? Real time operating system रे कोटा example all the mention RT Linux WX work Windows XE. ताले चलो प्रैक्टिकल आंसर नंबर डी टा उत्तर सठिक उत्तर कौन. ऑल ऑफ द मेंशनड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस विल टेस्ट इफ द शेड्यूलर assigns it is static priority. C remain unchanged. The priority of the process will remain unchanged if the scheduler against it is a static periodicity. Next question. What are the characteristics of host-based IDs? What option D? None of the mentioned. What logs are analyzed to detect instruction to honest operating system logo and audience information. एति कथा है. डी टा उत्तर सठिक उत्तर. 35 नंबर. What are the characteristics of stack-based IDs? Stack-based IDs ର characteristics କ'ଣ? Last C ଟା उत्तर सठिक उत्तर. They are integrated closely with the TCP/IP stack and watch packets. Next question. If the sum of the working set size increases exceeding the total number of available frames,
केते हेबो ए दी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट्स ए प्रोसेसर सस्पेंड का सस्पेंड करियो का रखियो का के फास्ट कथाटा एटा गोटे प्रोसेस सस्पेंड नेक्स्ट क्वेश्चन the information about all files in kept in separate dictionary separate directory structure. Next question the operating system keeps all small table containing information about all open files called dash open file table open file table. Next question देखिए what will happen in the single level directory what will happen in the single level directory. Option number A सटीक उत्तर the files are connected in the same directory all files are connected. Option number A ठीक उत्तर all files are connected in the same directory. Next question the operating system dash has links when traversing directly trees to preserve the acrylic structure of the system. Ignores to recover from failure in the network operations dash information may be mentioned state option D है state हो तो सटीक उत्तर on system where there are multiple operating system in decision to load a particular one is done by bootloader कौन द्वारा हुए bootloader करे boot loading operating system. Next question whenever a process needs input output to the from a disk is uses dash option A system calls or the operating calls system call. Next question the two steps and operating system takes no use of disk to hold it files and dash option D partitioning and logical formatting. Next question the dash program initializes all aspects of the system from CPU register device control and control. Option A also ठीक उत्तर bootstrap the bootstrap program initialize all aspects of the system. The in ASCST districts used in high or PCS to reach resolution operating system क्या है राव प्रधान ना आपण तो प्रधान. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बीटा उत्तर सटीक उत्तर the programs initialize all aspects of the system from CPU register to device controllers and the contents main memory then starts the operating system. Answer A होता है तो सटीक उत्तर bootstrap. तो क्वेश्चन करते network operating system runs on dash server. What are the types of distributed operating system? C network operating system. In Unix which system calls creates the new process? K B fork. In Unix a new process is created by fork function system call. Fork system calls returns a process ID which is generally the process ID of the chief process created. तो ऑपरेटिंग सिस्टम रे आज 50टा क्वेश्चन ऑलरेडी आम डिस्कसन कलु. थैंक यू वीडियो को लास्ट पर्यंत देखी तो वीडियो को लाइक करेंगे जदि भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सांग मान सहित शेयर करेंगे जहाँद्वारा कि से उपकृत हेबे. थैंक यू अपेक्षा करूँ पुणी नेक्स्ट वीडियो काली आसो. रही गुड नाइट जय जगन्नाथ.